डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इब्रार अहमद। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ओआईसी वर्सेस इंडिया। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या ओआईसी 1.7 बिलियन मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कश्मीर के मसले पर वाकई सीरियस हो गई है। क्या ओआईसी भारत पर कश्मीर में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी खत्म करवाने पर दबाव डाल रही है? क्या भारत का ओआईसी को जवाब इसकी हट नरमी का सबूत है? क्या आलमी बरादरी अपनी जमहूरियत और इंसानी हकूक को सिर्फ अपने इलाकों पर लागू करना चाहती है? इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। The third anniversary of the illegal occupation of Jammu and Kashmir was commemorated by the Organization of Islamic Cooperation through a statement urging the reenactment of Article 370, giving the region its special status along with respecting and adhering to the Human Rights Charter. जम्मू एंड कश्मीर पर स्पेशल हैसियत को खत्म किए हुए 3 ही साल गुजरे हैं कि इस्लामी कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के इस इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उसने भारत पर यह दबाव डाला है कि वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को दोबारा बहाल कर दे और कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जी की जा रही है उससे बाज रहे। As expected, such a show of support if India, which called this statement misleading and mischievous, भारत की हुकूमत ने ओआईसी की स्टेटमेंट को गलत और गुमराह कौन करार दिया है, all the while claiming that it had nothing but respect for all religions, a hard to believe claim considering the ongoing genocide against Muslim in India। और भारत ने यह दावा किया है कि भारत के अंदर तमाम मुसलमानों की और बाकी तमाम अक़लियत की मुकम्मल देखभाल और हिफाजत की जाती है, जबकि भारत के अंदर कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ईयर्स, मुसलसल कई सालों से कश्मीर हैज बिकम द होस्ट ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ब्लडीस्ट मिलिट्री सीज इन द वर्ल्ड। बरसों से कश्मीर मुकम्मल तौर पर फौजी मुहासरे से गिरा हुआ है। मोर देन 18,000 इंडिविजुअल हैव perished while countless others are routinely subjected to torturous circumstances that alienate them from the world entirely। और बरसों से तकरीबन 80,000 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है और आज भी 40 लाख के करीब कश्मीरियों की जिंदगी भारत ने अजीरन कर दी है। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया। मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। क्योंकि वो मुसलसल कई सालों से कश्मीर को अपने फौजी घेरे में लिए रखा हुआ है। द plight of their suffering and the public demand for the end of such barbaric rule has always been transparent and loud, and still only a few organizations like the OIC are brave enough to engage with the matter publicly। अब भारत के इस मकरूह धंधे और चेहरे को दिखाने के लिए ओआईसी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और इसके साथ और भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी ये दावा किया है कि वो इस कदम में भारत के खिलाफ खड़ी होंगी। फॉर इंडिया टू कंडेम दिस स्पोर्ट extended to over 4 million Kashmiris is just a reflection of the extent to which it will go to keep Kashmir suppressed, and Pakistan has and will continue to reject its fallacious claims of being tolerant, misunderstood, power or victim in the scenario।
جبکہ بھارت نے 40 لاکھ کشمیریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے اور پاکستان نے ہر محاذ پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت کے اس مکروہ چہرے کو وہ ہر فورم پر سب کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے۔ The job of our government now is to reiterate the OIC statement calling for the international community to come together for a solution to Kashmir problem۔ اور اب پاکستان کو OIC کی اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو پہلے سے زیادہ مضبوط پاؤں کے ساتھ بھارت کے مکروہ چہرے کو نقاب کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ Keeping this at the forefront is essential along with highlighting the calls for justice made by Kashmiris across the world۔ اور پوری دنیا کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یا وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا بھارت کے ساتھ اکانومی کی وجہ سے چپ ہیں۔ A rally at Times Square in New York City by Kashmiri Americans denounced India's action and called for the end to its illegitimate interference in the region۔ کشمیری نژاد امریکیوں نے ٹائم سکوائر پر ایک ریلی نکالی ہے اور اس ریلی میں انڈیا کے اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ورلڈ لیڈرز ایز سپورٹرز آف لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز مسٹ بی براؤڈ ٹو دا سیم پیج۔ اب دنیا کے جمہوریت پسند لوگوں کو بھی اس بات پر آنا پڑے گا کہ انہوں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ They have always been eager to assault liberal regime and safeguard democracy, but their silence on Kashmir, a region that is desperate for genuine democracy, is rather astounding۔ اب دنیا کے جو لبرل اور جمہوریت پسند لوگ ہیں جنہوں نے ہر جگہ انسانی حقوق کی علمبردار قوتوں کے مطابق اپنے نیریٹو کو سب کے سامنے بتایا ہے، اب وہ اس بھارت کے اس مکروہ چہرے کو آیا سب کے سامنے بے نقاب کریں گے یا بھارت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ We must do everything in our power to correct this and keep Kashmiri's fight for freedom in the limelight۔ اب ہمارا سارا مطالبہ انڈیا کے خلاف جو کشمیریوں کے اندر ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ان پر ہونا چاہیے کہ آیا ہم ان کی سفارتی اور سیاسی حمایت کو یقینی بنائیں گے یا انہیں اسی طرح چھوڑ دیں گے۔